Hello, friend. How are you? I hope you all are doing very good. And today I'm here with another cute topic. So, without wasting time, let's get into this topic. And today I will tell you how to prepare a cute topic within 1 minute with a magical strategy. So, let's start. So, our cute topic is describe a successful person who you once studied और वर्क विद। आपने एक सक्सेसफुल पर्सन के बारे में बताना है जिसके साथ आप पहले पढ़ चुके हो या कोई काम कर चुके हो। तो हमें सभी को पता है कि क्यू कार्ड में हमें कुछ बुलेट पॉइंट्स भी मिलते हैं विच हेल्प अस टू प्रिपेयर अ क्यू टॉपिक, जो कि हमें हिंट देते हैं कि हमने अपने क्यू टॉपिक में आगे किन किन पॉइंट्स के बारे में हम जो है बात कर सकते हैं। सो आर पॉइंट्स आर हु दिस पर्सन इज, ये पर्सन कौन है, वेन यू स्टडीड एंड वर्कड, कब आपने इस पर्सन के साथ जो है स्टडी किया, वर्क किया, व्हाट यू डिड टुगेदर, आपने एक साथ क्या क्या किया, व्हाट दिस पर्सन डिड टू बिकम सक्सेसफुल, इस पर्सन ने सक्सेसफुल बनने के लिए क्या किया, एंड एट लास्ट हाउ यू फेल्ट अबाउट स्टडिंग वर्किंग विद दिस पर्सन. So the strategy is here. You know, there are many teachers, or we can say like YouTubers who tells you like you make a circle like this and then arrows like who, when, what you did, what he did and how you feel. यहाँ पे आप ऐसा जो सर्कल बना के सारा इस पे अपने जो पॉइंट्स हैं वो लिख लो और यहीं पे जो है कनेक्टर्स और वोकैबुलरी जो है आप अपना राइट डाउन कर लो. बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट द right way. I don't find it the right way to prepare your Q topic. This is because when you speak and when you take a look of your paper, then you can like count the line, which was the line when I need to start again, when I have to pick my sentence. So I always go with this way. You just write straight in the lines. Who? Bosom friend. वेन इन कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ठीक है. तो जब भी हमारे पास कोई क्यू टॉपिक आता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल सेंटेंस वी हैव टू नीड टू जस्ट जॉट डाउन द की पॉइंट्स. लाइक यू जस्ट नीड टू mention the answer of your question and rest of the story you have to make by yourself while speaking. Whatever comes in your mind, you have to speak that only. लाइक मुझे एक क्यों टॉपिक मिला, लाइक डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल पर्सन हु यू वंस स्टडीड और वर्क विद. तो जैसे ही मुझे ये की पॉइंट्स मिले, इनको मैंने विद इन 1 मिनट आंसर कर लिया कि भाई क्या क्या मेरे मेन पॉइंट्स होंगे. हु, कौन है ये पर्सन जो सक्सेसफुल है, मेरा बॉसम फ्रेंड है. व्हेन, मैं कब इनके साथ स्टडीड की. कॉलेज बोल सकते हो, स्कूल बोल सकते हो, यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, ट्यूशन बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो. व्हाट यू डिड, आपने क्या क्या किया साथ में. मैंने सिर्फ मेन कीवर्ड्स लिखे लाइक सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स एंड प्लेड. हमने ये कुछ एक्टिविटी जो है की. व्हाट ही शी डिड टू बिकम सक्सेसफुल, उसने क्या किया, ठीक है. हाउ डू यू फील अबाउट दिस पर्सन ओवर द मून, ठीक है. जैसे हम बता सकते हैं कि उसने सक्सेसफुल बनने के लिए क्या किया. ही डिड हार्ड वर्क, ही प्रैक्टिस्ड अलॉट, है ना. अब अपना क्या है कीवर्ड्स यहाँ पे जो है मेंशन कर लेंगे. तो इस तरह से हम अपना जो है क्यू टॉपिक प्रिपेयर करेंगे इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द सर्कल एंड जस्ट मेकिंग it's not the right way according to me, because I don't find it much effective. So let's start the Q topic. Our Q topic is more often than not I bump into a number of successful persons. इसका मतलब क्या है. more often than not का मतलब है कि इसमें मैं यहाँ पे इनका कलर चेंज कर देती हूँ. जो भी हमारे मेन वोकैबुलरी और फ्रेजेस हैं, ये कलर सूट नहीं कर रहा भाई. मोर ऑफन देन नॉट का मतलब है यूजुअली कि हम लगाते हैं. बम्प इनटू क्या होता है, जब आप सडनली किसी से मिलते हैं. अ नंबर ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है. अक्सर मैं ऐसे लोग अक्सर मैं एक नंबर ऑफ जो सक्सेसफुल पर्सन से जो है मिलता हूँ. हाउएवर टुडे आई एम गोइंग टू किक ऑफ होता है स्टार्ट बाय टेलिंग यू अबाउट समवन with whom I have studied.
He is none other than my bosom friend. Bosom friend क्या होता है? Best friend. Ram, I vividly remember it's a matter around a couple of years back when I was studying in college when I met him for the very first time. So ये वो टाइम है जब मैं उसे पहली बार मिला था. I can recall that just in few days मैं ये चीज़ रिकॉल कर सकता हूँ कि within few days we had become a very good friend of mine. He had become a very good friend of mine कि वो एक मेरा बहुत ही अच्छा जो है फ्रेंड बन चुका है. The one of the most important part of our friendhood is that we have been right hand of one another. कह रहे हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं किसका, उनके जो फ्रेंडहुड का, वो क्या है कि वो एक दूसरे के राइट हैंड है. एज वी बोथ यूज टू स्टडी एक्स्ट्रा आवर्स एंड वेन एवर एनी वन हैड एनी प्रॉब्लम वी यूज टू असिस्ट वेरी डियरली. ठीक है, जब भी हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो एक दूसरे को बहुत ही डियरली हेल्प करते थे. दिस क्लोज नेट फ्रेंडशिप क्या होती है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप. ठीक है. हैज बीन प्रूवन बून फॉर मी. बून होता है आशीर्वाद. फॉर मी बिकॉज ही हैज बीन हेल्प मी थ्रू थिक एंड थिन. थिक एंड थिन क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स, अपनी खुशी और गम में. I remember one time when during my exam I got sick and unable to prepare well that time. मुझे याद है कि ये मेरे एग्ज़ाम का टाइम था जब मैं सिक हो गया और मैं बिल्कुल अनेबल था अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए. देन ही बोन्ड द मिडनाइट ऑयल. बोन्ड द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि 24 आवर्स हम उस काम को करते हैं. टू मेक कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स फॉर मी सो दैट आई कुड बी एबल टू रिवाइज सिलेबस क्विकली. उसने मेरे लिए क्या किया? बहुत मेहनत की. किस लिए? नोट्स को बनाने के लिए, ताकि मैं जो है अपने सिलेबस को क्विकली रिवाइज कर सकूं. मोरओवर वी बोथ यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर. Sometime we used to play hockey in the playground and especially on weekend we used to go cinema as we really adore comedy movies. Adore होता है like करना. Next, at last, I would share that he has been a CEO of a multinational company and earning handsome income. I must say that the dedication and passion he had after achieving goals is the key which took him to the peak of success. All in all, as far as my feelings are concerned, I feel blessed to have him as my friend. So, this is all about our क्योर टॉपिक. आई होप आपको हर एक जो वोकैबुलरी वर्ड्स, फ्रेजेस और इडियम्स है वो अंडरस्टैंड हुए होंगे. और इफ देर इज एनी इशू देन यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन कमेंट मी. थैंक यू. We will meet in the next video.